Hello bachcho, let's see the question. The question said that in the figure a potential difference V is equal to 75 volt is applied across the capacitor arrangement with a capacitance of C1 equal to 10 microfarad, C2 equal to 5 microfarad and C3 equal to 15 microfarad. What are the charge Q3, potential difference V3 and the stored energy U3 for the capacitor 3. सो यहाँ पर कैपेसिटर 3 के लिए चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसके अक्रॉस, और साथ में वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो हमें बताना है. बेसिकली हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, पोटेंशियल दिया हुआ है अक्रॉस दिस होल सर्किट, हमें C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है और C3 दिया हुआ है, उनकी वैल्यू क्या है तो, और साथ में हमें Q1 निकालना है, चार्ज स्टोर्ड इन द C1. V1 निकालना है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड फॉर द एंड U1 फॉर द कैपेसिटर 1. वही सेम चीज हमें Q2, V2 और U2 फॉर द कैपेसिटर 2 निकालनी है. सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. की कंसेप्ट combinations of capacitors. So different capacitor के combination. यहाँ पर हम let us suppose that this is A, this is B. Now अगर हम देखें तो दिस इज ए, इसे बी से डिनोट कर सकते हैं. दिस इज बी, C1 नॉट दिस C3, C3 बी से कौन सा अटैच है हम देख सकते हैं. यहाँ पर C3 अटैच है और साथ में यहाँ पर इस तरह C1 और C2 यहाँ पर अटैच है ए पॉइंट से, C1 और C2. So from this figure it is clear that they both are the parallel, C1 and C2 are parallel to each other. यहाँ पर जो A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 75 वोल्ट. देयरफॉर हमें यहाँ पर निकालना है कि कितना चार्ज ये सारे कैपेसिटर स्टोर करते हैं, उनमें उनके पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और U2 उनके अक्रॉस क्या होगा. नाउ हमें यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड A एंड B हमें V75 दिया हुआ है. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दी C1 एंड C2 वुड बी C1 प्लस C2. दिस इज इक्वल टू 10 plus 5, it is 15 माइक्रोफैरड. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा C1 और C2 का 15 माइक्रोफैरड, जो कि C3 के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच होगा. उसके कारण क्या होगा कि जैसे कि हमें पता है जो यहाँ पर प्रीवियसली जो चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल प्रीवियसली जो V था अक्रॉस दोनों के अक्रॉस. So now because of the value of the capacitance for the C3 and the equivalent capacitance of C1 and C2 would be same, then the potential must be divided for the both of these. So अगर हम by using the mathematical equation देखें, so now the total equivalent resistance of the circuit वो क्या हो जाएगा 1 by C. Let us suppose total equivalent resistance TEQ equal to 1 by CEQ plus 1 by C3. So और हमें पता है कि C is equal to क्या होता है Q by V. Therefore total V upon total charge equal to V
dash upon Q1 plus V dash upon Q2, जो कि हम देख सकते हैं कि C3 और C इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम है, उसके कारण वी कैन से दैट दे विल both store the same amount of charge. Let us suppose we denote that charge with a Q3. So वो दोनों same amount of charge store करेंगे. Therefore सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के कारण उनमें से सेम चार्ज फ्लो होगा. Therefore the total charge here that would be the Q3. So hence Q3 get cancelled out. We will get from this V equal to twice of V3. Instead of V dash we can also write here V3. जैसे कि हमने देखा कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, उसके कारण हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं. Hence V3 equal to V by 2, that would be 75 by 2, 37.5 volt. So V3 हमें कितना मिला? 37.5 volt. Now we have the value of V3. We have the value of capacitance. So we can calculate the charge Q3. So charge Q3 is equal to क्या होगा? C3 into V3. So C3 is equal to 15 microfarad into 10 to the power minus 6 और यहाँ पर 37.5 volt. So this would be Q3 equal to 5.62 into 10 to the power minus 4 coulomb. So this is ये हो गया Q3. Now हमें और पूछा गया है for calculating the value of Q2 and Q1. So U3 equal to क्या होगा? U3 equal to half of CV square, C3 square, और this is V3 equal to U3 equal to half of C3 की वैल्यू हमारे पास है, that is 15 माइक्रोफैरेड into 10 to the power minus 6 V 37.5 V3 इसका whole square. So U3 becomes 0.105 or we can say 1.05 into 10 to the power minus 2 जूल. तो इतनी एनर्जी स्टोर करेगा कैपेसिटर U3. जैसे कि हमने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C3 एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ C1 एंड C2 वुड बी सेम. सो ये जो पोटेंशियल रहेगा इनके अक्रॉस ये सेम ही रहेगा. देयरफॉर C1 और C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा दैट वुड बी सेम. पोटेंशियल V2 इक्वल टू V1 इक्वल टू V3 and that would be 37.5.
वोल्ट, बट वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के कारण वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. हेंस therefore we can calculate Q2 and Q1 easily with the formula C2V2. So C की value है 5 microfarad into 10 to the 5, therefore 5 into 10 to the power minus 6 into V2, that is 37.5 volt. 37.5. So this will become, therefore Q2 equal to 1.87 into 10 to the power minus 4 coulomb. Similarly for Q1 equal to C1 plus V1, that is 10 into 10 to the power minus 6 into 37.5. So Q1 becomes 3.75 into 10 to the power minus 4 coulomb. We have to calculate for the U3 and U2. So U2 is equal to half of C2 V2 square. It means that half of Q2 into V2. Q2 is 1.87 into 37.5. 1.87 into 10 to the power minus 4. (35.15) into 10 to the power minus 2 joule. ut equal to 37.15 into 10 to the power minus 2 joule. Now U1 equal to half of Q1 into V1. So Q1 की वैल्यू हमारे पास है 3.75 into 10 to the power minus 4 into 37.5 volt. So U1 equal to क्या होगा 70.3 into 10 to the power minus 4 joule. So U1 कितना मिला 70.3 into 10 to the power minus 4 joule. So आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.